Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 30th of September. The session will be quite interesting students. In this video we are talking about Children in India 2025 publication analytics that has been recently released. Then we will be talking about Environmental Accounting on Forest 2025, a report released by Ministry of Statistics and Program Implementation. Then Himachal Pradesh Cold Desert Biosphere recently received the UNESCO tag. We will be discussing it, and then we will be talking about Prime Minister Narendra Modi, who inaugurated multiple projects in Odisha. All these things and many more will be discussed, so stay tuned with us till the end. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Before starting the main content students, I want you all to know or tell me in the comment section that what are your views on the revision part that we are doing in the middle of the video. Are these one-liners beneficial to you all? Are they getting, or are you noting them down, or are they any benefit to you? Are they helping you in revision or not? Let me know in the comment section. Right now let's start with the national affairs. First is Ministry of Statistics and Program Implementation. They have released a report that is Children in India 2025. This is the fourth edition of this report that has been released. It was released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, and it was released during the 29th edition of the Conference of Central and State Statistical Organization in Union Territory Chandigarh. So question can be asked that where was this released? It was released in Chandigarh. It was during the 29th edition of CHSL. What is this? This is your Conference of Central and State Statistical Organization, and this latest publication, it provides an insight about the well-being of the children in the country. It is talking about the immortality rate, it is talking about the birth rate, it is talking about the adoption rate, right? If we see the infant mortality rate here, it has sharply decreased from 44 in 2011 to just 25 deaths per 1000 live births in 2023. Whereas further, if we talk about the birth rate, right, it has also shown a significant increase, but from 2022 onwards to 2024 we have seen a decrease, right? In 2022 it was 19.1, whereas it decreased to 18.4 per thousand population in 2023, correct? Then we have seen in adoptions, there has been an increase in adoptions, right? In 2017 18 fiscal year, if we see, there were 3,927 adoption, whereas in 24-25 we have seen 4,515 adoptions so far. So we can say the adoption rate is also increasing, right students? Next, see, apart from this, if question asked here is, among all the Indian states in 2023, it is Chhattisgarh and Madhya Pradesh, they registered the highest infant mortality rate, whereas Kerala recorded the lowest infant mortality rate. Take a note of this also. Then students, if I ask you that tell me recently what is the rank of India, or not just this, tell me, okay, what is the rank of India in the World Food, not this World Food Program, not the rank. If we talk about the World Food India 2025, which edition of it was? It was the fourth edition of it that was held in New Delhi, right? Then if we talk about our India, there is a projection that our country India will become the world's third largest economy by 2028, and these projections are given by Morgan Stanley, right? Then India Post, we have partnered with NPCI International, that is NIPL, right? And this is to provide global remittances via UPI and postal network. Also, our Prime Minister Narendra Modi, he became the second largest serving Prime Minister, and he has surpassed the Indira Gandhi's record. Next, okay, one more thing here, remember, we know that the palm oil industry is increasing in India. The requirement or the consumption of palm oil is increasing in India. So recently it was India and Indonesia, they have partnered together, right, where we'll be importing these palm oils from where? From Indonesia.
Moving on, Ministry of Statistics and Program Implementation, they have recently released a report that is your Environment Accounting on Forest report. This is the 8th edition of this report that has been recently released, and it is the first dedicated report on forest accounting. This was also during the 29th edition of the Conference of Central State and Statistical Organization in Chandigarh. So both of these were released during the Chandigarh. According to this report, India's forest cover grew by 17,444.61 square kilometer, reaching 7.15 lakh square kilometer from 2010-11 to 21-22. And in this, if we see which is the state, if the question is asked in which state we saw the highest rise of the forest cover, so it is Kerala. In Kerala state, we saw the highest forest cover rise, right? It was by 4,137 square kilometer. It was followed by Karnataka, then Tamil Nadu. Right, students, take a note of this. And apart from this, if I ask you for Tamil Nadu only, tell me, Tamil Nadu will be setting up India's first Hornbill Conservation Center. Where will be the first Hornbill Conservation Center in Tamil Nadu established? It will be at Annamalai Tiger Reserve. Right. Then apart from this, recently Bihar's Chief Minister Nitish Kumar has hiked the journalist's pension. Right. For journalists, the pension hike has been seen recently, and it is to 15,000 rupees per month. Next we talk about VinFast. They are setting up a plant for electric vehicles in Tamil Nadu, in Tuticorin, for which to sell these electric vehicles they have partnered with State Bank of India for financing their vehicles, and also they have launched their first showroom. Where they have launched their showroom in Surat. Correct, take a note of it. One more thing, remember here only, students, it is Kaziranga Tiger Reserve that has recorded the third highest tiger reserve density in India, right, with 148 tigers in 2024. Then Sustainable Agriculture Day. When do we observe this Sustainable Agriculture Day? Observed on 7th of August, right? And this Sustainable Agriculture Day, it honors MS Swaminathan. Next is Himachal Pradesh Cool Desert Biosphere Reserve recently got the UNESCO tag, and India count now at 13. Take a note of this, students, right? So during the 37th session of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, that is your UNESCO, right? And this was held in Paris, France. This is the location, right? During this session, India's Cold Desert Biosphere Reserve, that is in Himachal Pradesh, it was included in the World Network of Biosphere Reserves. Correct, take a note of this, and with this it became the 13th Biosphere Reserve to enter the United Nations World Network of Biosphere Reserve. Right, very important, students, take a note of this. And this particular Cool Desert Biosphere Reserve, it spans around 7,770 square kilometer of area. Correct. Apart from this, Ramsar sites, that India also included 2 Ramsar sites from Bihar, that is your Gokul Jalashay, that is in Buxar district, and Udaipur Jheel. Right. These both are in Bihar, and they were added to the Ramsar sites. Right. And now there are 93 Ramsar sites in India, and India is the first in Asia in terms of the number of sites, and third in the world after UK, Mexico, and then India. In UK, if we see, there are 176 Ramsar sites. In Mexico, there are 144 Ramsar sites, and are in India now there are 93 Ramsar sites after the addition of these 2 Ramsar sites that were in Bihar. Correct. Next is Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone and inaugurated projects worth 60,000 crore rupees in Jharsuguda, Odisha. Right, so multiple projects were inaugurated here in Odisha. These projects worth 60,000 crore rupees comes in sectors such as your railway, education, healthcare, skill development, housing, etc. Right, if we talk about the railway sector here you can see for Koratpur Odisha to Bagda Odisha line was inaugurated, and
Manapur, Odisha to Korapur, Gopalpur in Andhra Pradesh line was inaugurated. Then Amrit Bharat Express was flagged off. Then if we talk about education sector, IIT expansion has been planned here, valued at 11,000 crore rupees in Tirupati, in Palakkad, Kerala, in Bhilai, Jammu Kashmir, Jodhpur, Patna and Indore. Then MERIT merit scheme, that is your launch the multidisciplinary education and research improvement in technical education scheme. This is a central sector scheme. Right here, Odisha Skill Development Project Phase 2 was launched under the World Skill Center that will be established in the Sambalpur in Behrampur. Right, multiple other projects for related to the education sector were also launched here. Where in Odisha? Right, in Odisha, if we talk about who is the Chief Minister, Mohan Charan Manji ji. Right, what is the capital here? Bhubaneswar. Right, then Simlipal Tiger Reserve is also located here. Next, Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the BSNL's Swadeshi 4G network, and it was inaugurated where? In Odisha. Swadeshi 4G network. Correct. This is the 4th generation network, and this was during the 25th, that is your year celebration or the silver jubilee of BSNL in Odisha. With this, now India has entered into the League of Nations such as Denmark, Sweden, South Korea and China that develops homegrown telecom equipment. Right, I repeat, here the network features radio access network provided by Tejas Network, CDOT. Right, they are partnering here. Also, BSNL is entrusted with the responsibility of the deployment of indigenous 4G network across India. Correct. And here this network is fully software driven cloud based architecture which ensures seamless transition to 5G and is in line with the Bharat 6G vision of 2030. If we talk about BSNL, Bharat Sanchar Nigam Limited, student, who is the chairman and managing director here? A. Robert Gerard Ravi, headquartered in New Delhi, established in the year 2000. Correct. So we are talking about India's, our Prime Minister Narendra Modi has inaugurated BSNL's Swadeshi 4G network in Odisha, and it was during the Silver Jubilee celebration of BSNL, that is the 25th anniversary of BSNL. Right, students? Next. Also here you can see, if we talk about expansion to 5G, this 5th generation service was first launched on 1st of October 2022. Within 8 months of launch, 2 lakh sites including 700 districts have been installed here. Then the presence of 5G in India. Currently 5G network has been rolled out in 28 states and 8 union territories of the country, becoming the world's fastest 5G rollout. Here only if we talk about Belgian Grand Prix, students, who won this? This was won by Oscar Piastri. Then CRPF Racing Day, we observe this on 27th of July. World Nature Conservation Day on 28th of July. 29th of July is observed as International Tiger Day. Next is the 3rd Unmesh International Literature Festival, held where? In Patna, Bihar. Take a note of this, students. Right, this is the 3rd edition of the Unmesh International Literature Festival, organized by Sahitya Academy in collaboration with the Ministry of Culture, and it was with Government of India and the Government of Bihar that together hosted this, and this was held at the Samrat Akash Show Convention Center from 25th to 28th of September in Patna, Bihar. Correct. Take a note of this. Why this is important? This is your Unmesh International Literature Festival. Correct. And here this particular festival, it will feature 90 sessions including panel discussions, author readings, workshops and cultural performances. Next is IAF, Indian Air Force and IIT Ropar. They have signed an MOU for indigenous technology development. I repeat, the Maintenance Command of the Indian Air Force and the Indian Institute of Technology Ropar, Punjab has signed a memorandum of understanding for collaborative development projects that are aimed at supporting the sustenance and operational requirement of Indian Air Force. This agreement was signed by Air Marshal Vijay Kumar Garg. Apart from this, the main objective of this is to provide indigenous solutions and advanced technology for the maintenance of the Indian Air Force weapon systems. Also here, IIT Ropar will be providing the consultancy here. They will be providing the feasibility studies. They will be providing the technology support for the upgradation. Next is appointments and resignation. Government has appointed Sirish Chandra Murmu as the Deputy Governor of RBI. As you can see him in the picture here, right? Sirish Chandra Murmu, the Deputy Governor of RBI, has been appointed for the next 3 years. Right? His appointment will be starting from 9th of October 2025. And he will be succeeding whom? He will be succeeding Rajeshwar Rao. He will be succeeding Rajeshwar Rao. Correct? Next
Next is Mithun Manhans elected as the 37th BCCI president. As you can see him in the picture here recently, right? Mithun Manas, the former Delhi cricket captain, was elected as the 37th president of BCCI during the 94th annual general meeting that was held in Mumbai, Maharashtra. He succeeded the former All Indian rounder Roger Binney. Right? So who is the new 37th BCCI president? Mithun Manhans. Next is the science and technology. CSIR's arm AMPRI, right? That is your Advanced Materials Process Research Institute. Correct? They have indigenously developed SODAR system inaugurated at the IMD Delhi. What is this SODAR system? SODAR. What is this SODAR system? It is your sound detection and ranging system. Correct? Indigenously developed by CSIR's arm AMPRI, and it was inaugurated at the India Meteorological Department. Now, what is the benefit of this? This will enhance the collaborative work between the entities in the field of climate and environment studies. That is your EVS. Right? Take a note of it. Then next is, this is, as you can see here, in the field of climate and environmental studies, this will enhance the collaborative research. Next, environment students, new species of finless snake eel named after the Kanya Kumari has been recently launched. Directly remember this, can be asked. And here you can see, correct, this was launched where? At ICIR's arm NBFGR. Next is 17th Asia Cup was held recently, and our country has won by defeating Pakistan in the final. Right? And next question can be asked is, where was this Asia Cup held? It was held in Dubai, UAE. This was the 17th edition of the Asia Cup, and in the final it was India and Pakistan. India defeated Pakistan here, and Team India has earned a prize pool of $3 lakh, that is approximately 2.6 crore rupees. Correct? Very important, students, take a note of it. Then the next edition, it is scheduled to be held in 2027, and it is expected this will be, or it is finalized so far that Bangladesh will be hosting it. Bangladesh will be the hosting this, right? And this Asia Cup 2027 will be in the one-day international format. Right now in UAE it was the T20 international format, but in Bangladesh it will be in the ODI format, that is one-day international format. Who was the player of the tournament here, students? Player of the tournament was Abhishek Sharma, a very promising player of India. Next, here you can see player of the match Tilak Verma for the finals, game changer of the match Shivam Dubey, player of the tournament Abhishek Sharma, and most valuable player of the tournament Kuldeep Yadav. Next is, our country India has won the 10th edition of the 2025 SAFF Under-17 Men's Football Championship title. I repeat, 10th edition of the SAFF Under-17 Men's Football Championship was held from 20 to 27th of September in Colombo, Sri Lanka. After a week of intense competition among South Asian teams, our country India's Under-17 team has emerged victorious by defeating Bangladesh in the finals of 2025. Very important, our country win the 10th edition of the 2025 SAFF Under-17 Championship. Right, students, take a note of it. Who was the opponent here? Bangladesh, winner India. This was the 10th edition. Next, International Deaf Day observed on 28th of September, and this day is observed on the last Sunday of the September month. Last Sunday of September month, right? And this is 28th of September, and it is to support the deaf community worldwide, raising awareness of the challenge they face on daily basis. Then there is International Week of the Deaf. International Week of Deaf. It is observed from 22nd to 28th of September. Right, students, take a note. Then next is International Day for the Universal Access to Information, observed on 28th of September, and this is annually observed to raise awareness about strengthening and implementing the information laws. This is the 6th edition of this day that was observed, and there is a theme here, students. Ensuring access to environmental information in the digital age is the theme here, and first time it was observed in 2025 by UNESCO. Then next, International Day of Awareness of Food Loss and Waste, observed on 29th of September, and this day is to basically observe to conserve food, not to waste the food, and also urgency of reducing the food loss. Correct? This day, it was the 6th edition of this day that was observed globally. This day is generally observed by Food and Agriculture Organization, the UN-SAM, and United Nations Environment Program. Next is state news, students. NJB, that is your National Jute Board,
JCI, that is your Jute Corporation of India, and ICAR SAM, CRIJAF, and Nagaland government. They have signed MOU to promote jute and natural fibers in Nagaland. Right. So in order to promote jute in Nagaland, this particular MOU was signed, and there are 4 organizations that have signed this MOU. That is your National Jute Board, Jute Corporation of India, ICAR's arm, CRIJAF, and Nagaland government. These 4 organizations, they have signed the MOU here, and it was signed in Kohima, Nagaland, and it is to promote jute in Nagaland. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be quite beneficial for you all. In August, the first ever interstate agriculture trade under Dash was successfully conducted between Jammu and Kashmir and Maharashtra. It was under the National Agriculture Market, that is, 4th option is rightly mentioned here. Correct. So it was under ENAM National Agriculture Market, where there has been, what is this benefit of this National Agriculture Market is that there are no middlemen, right? The farmers are directly connected with the sellers, right, or the buyers. So it eliminates the middleman, hence the income that is generated by the farmers through this is much more. Next, on August, the Government e-Marketplace, that is your GEM, India's first national public procurement portal, marked their 9th foundation day to highlight GEM's journey in transforming public procurement in India through transparency and efficiency. Mention the ministry which holds GEM. Which is that ministry? Ministry is your Ministry of Commerce and Industry. Right? Next is mention the entity that in August 2025 introduced Work for Viksit Bharat portal to recruit professionals across various sectors for national development initiatives. So mention that entity. Which is that entity we are talking about? It is Niti Aayog, right? And the portal aims to recruit professionals across various sectors such as economies, big data, infrastructure, climate change, telecom, IT, that supports India's Viksit Bharat growth vision. Next, in August, the Department of Administrative Reforms and Public Grievances partnered with Right to Services Commissioners of States and Union Territories to enhance the e-services and strengthen the public service delivery framework under Dash Way Forward. It is under the National E-Governance Service Delivery Assessment for Way Forward. Next, in August, which state or union territory government signed an agreement with NHPC Limited to develop 2 pumped storage projects with capacity of 1800 megawatt. It is Chhattisgarh. Next, in which city was India's first of its kind animal stem cell biobank and animal stem cell laboratory inaugurated by Union Minister of State for Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, on 9th of August. So in which state was India's first of its kind animal stem cell biobank and animal stem cell laboratory inaugurated? It was inaugurated in Hyderabad, Telangana. Next, pick out the correct statement regarding the Bengaluru Metro development in August 2025. If we look at the options here, all these 3 options are rightly mentioned. Next, on August, Prime Minister Narendra Modi virtually flagged off India's longest running Vande Bharat Express between Dash and Dash, spanning approximately 881 km. It is between Ajni and Pune, that spans across 881 km, and it is in between Ajni is in Nagpur, right, and Pune, it is in Maharashtra. Both are in Maharashtra, but from Ajni in Nagpur to Pune, Maharashtra. Next, identify the incorrect statement regarding the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana launched in year 2016. Here, if we look at the option, which of the following is incorrect statement? A is right, B is right, C is our option as it is an incorrect statement. In terms of the number of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana scheme holders, state-wise, Bihar is leading with 1.85 CR households as of December 2025. No, it is not Bihar that is leading here. It is Uttar Pradesh that is leading in this scheme. Now option C is also right. Next is mention the name of the country with which Government of India signed a trade cooperation pact to enhance trade alliance between cooperatives of both the nations. So mention the name of that country. It is Zambia. Next, in August, Maharashtra's Chief Minister Devendra Fadnavis has launched the AI-enabled Garuda Drishti to detect which category of online threats on social media platforms, including hate speech and financial scams. So, to detect which category of online threats on social media platforms, it is fraudulent cyber activities. Next,
The government of Karnataka in August, they have launched Ease of Doing Business Cell under Global Capacity Center policy for 2025 4 to 2029 that will be attracting 500 new global capacity centers by 2029. Identify the initiative here. It is Catalyst. This is the initiative here, right? And the government of India have launched this Ease of Doing Business Cell under Global Capacity Policy to attract this new global capacity centers by 2029 and identify the initiative. It is Catalyst. Next, Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan has announced a digital transfer of insurance payout worth how much amount? That is worth 3,200 crore rupees directly through digital benefit transfer to the bank account of farmers during event marking 9 years of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Right, and under the state-wise claim distribution, farmers in Madhya Pradesh received 1,156 crore rupees and farmers in Rajasthan received 1,121 crore rupees. Next is in August, the Ministry of Health and Family Welfare launched Shresht, a first of its kind national initiative to enhance state drug regulatory system. What does the letter R in the Shresht stands for? R here stands for regulatory, right? Next is in August, Ministry of Home Affairs has issued a gazette notification under the clause DA of the section 7D of the Citizenship Act of 1955 to tighten the rules governing overseas citizens of India card holders. The card holder is sentenced to imprisonment for 2 years or more, or they are named in the charge sheet for an offence punishable within 7 years or more of the imprisonment. Correct? Next, in which state was India's first AI-enabled drone-based cloud seeding experiment launched in August month? So it was in Rajasthan. Next is, and what is this cloud seeding basically? Cloud seeding is artificial rain. Artificial rain. Next, in August, Dash commissioned India's first 2x25 kilovolt electric traction substation under the Mission Raftar initiative at the Nagda Khachroad section of the Ratlam division in Madhya Pradesh. So it is Western Railways, right? They have commissioned India's first 2x25 kilowatt electric traction substation. Next, to deliver which of the following items to the doorsteps of eligible beneficiaries, a scheme called Thayamunar Thitam was launched in August in the Tamil Nadu government. So to deliver which kind of items to the doorstep this scheme was launched? It was to deliver ration items. Right? To deliver ration items to doorstep, this Thayamunar Thitam, this scheme was launched. Next, pick out the correct statement regarding the launch of Bharat Steel 2026 by Union Minister for Steel and Heavy Industries H.D. Kumaraswamy. So pick out the correct statement here. Here all these three options are rightly mentioned. Next, identify the flagship initiative of the Ministry of Social Justice and Empowerment aimed at creating a drug-free India, which completed their 5th anniversary with a special event held on 13th of August in Delhi. So it is Nasha Mukt Bharat Abhiyan. Moving on, and when was this launched? It was launched on 15th of August in 2020. Next, in August, Union Minister for New and Renewable Energy Prahlad Joshi announced that India's solar photovoltaic module manufacturing capacity under the approved list of models and manufacturers increased from 2.3 gigawatt in 2014 to 100 gigawatt in 2025. Next, in August, name the oil refinery company in India that became the first in India to receive International Sustainability and Carbon Certification under CORSIA for Sustainable Aviation Fuel at its Panipat refinery in Haryana. Right? So name the oil refinery company in India. It is Indian Oil Corporation Limited. Next, in August, which state has launched a customized version of Hostile Activity Watch Kernel, that is HAWK, that is a digital centralized forest with wildlife crime management system designed to curb forest and wildlife crimes for the state's forest department. So which state launched this? It was launched by Tamil Nadu. With this, Tamil Nadu became the third state after Kerala, then Karnataka, and now it is third is Tamil Nadu to implement it. Next, Prime Minister Narendra Modi marked the completion of 6 years of Jal Jeevan Mission as per Union Budget. The Government of India has proposed to extend Jal Jeevan Mission till which year? So, it has been proposed to extend it till 2028. Next, name the AI-powered summarization tool launched by the Ministry of Panchayati Raj in August to generate structured minutes of meetings from Gram Sabha and Panchayat meeting recordings. It is Sabhasa.
Next is our homework section, students. First question is Sauragya. This is a brand, a premium ethnic brand launched by which organization in collaboration with whom? Second question, recently Rabi Abhiyan 2025 was launched. It was launched in New Delhi. You have to tell me what is this Rabi Abhiyan. Correct. Then apart from this, in Bihar, 10,000 rupees to 75 lakh women will be provided. Name the scheme under which this amount will be provided. Fourth question, recently how many natural sites from India has been added to the UNESCO's tentative World Heritage list? And fifth question, students, tell me recently who will be hosting the 5th edition of the World Teak Conference, right? Where this will be hosted and what will be the theme of it. Then sixth question, what is the rank of our India in Global Innovation Index and the country that secured the first position? Seventh question, recently, tell me recently, if I ask you who has been appointed as the next chairman of Coal India Limited. Eighth question, who has been appointed as the chairman of Advertising Standard Council of India? And ninth question, students, tell me recently who received the inaugural Diabetes Global Impact Award? Diabetes Global Impact Award. This is the inaugural edition. That is the first edition. And then 10th question. Recently, which Indian naval ship has reached Fiji? Tell me that. And why this Indian naval ship? What is the name of it that reached Fiji? So these are your 10 homework questions, students. And I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो दोस्तों, आज की वीडियो में 30 सितंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आप सभी के लिए. आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 की. देन हम इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट के ऊपर बात करेंगे. हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को भी यूनेस्को टैग मिला है, उसको डिस्कस करेंगे. एंड हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने ओडिशा में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए, उनको डिस्कस करेंगे. सेशन काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आई वांट योर ऑल सभी का ओपिनियन मेरे को चाहिए कि आप मुझे बताओ कमेंट करके नीचे कि क्या आपको जो ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ इन द मिडल ऑफ द वीडियो, बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में ये रिवीजन रहती है, क्या आपको ये रिवीजन पसंद आ रही है? अगर आ रही है तो नीचे कमेंट में बताओ दैट आपको इससे बेनिफिट हो रहा है एंड यू आर लाइकिंग दिस रिवीजन पार्ट, सो दैट वी कैन कंटिन्यू, राइट? हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकें. चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 की. अभी रिपोर्ट रिलीज की गई, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा. ये 4th एडिशन है इस रिपोर्ट का जो रिलीज किया गया है. एंड ये रिपोर्ट रिलीज की गई ड्यूरिंग द 29th एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. ये याद रखना, अगले टॉपिक में भी ये काम आने वाला है. तो इसके दौरान ये रिपोर्ट रिलीज की गई. ये रिपोर्ट बताती है अबाउट द वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री, राइट? मतलब इन्फेंट इनमॉर्टेलिटी रेट कितना है, बर्थ रेट कितना है हमारे बच्चों का, एंड जो एडॉप्शंस हैं वो हमें बढ़ते हुए दिखे या कम होते हुए दिखे. तो वन बाय वन देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये डिक्रीज हो गया, जो कि 44 था पर लाइव 1000 लाइव बर्थ्स इन 2011, गिर के भी 25 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स हो गया 2023 में. गुड ग्रोथ हुई है, मतलब अच्छी चीज़ है. बर्थ रेट की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर हम 2022 का डाटा देखें तो 19.1 था, जो कि 2023 में गिरकर 18.4 हो गया. वहीं पे अगर मैं बात करूं अडॉप्शंस की, तो अडॉप्शंस यहां पर बढ़ते हुए दिखे हैं. 3927 अडॉप्शंस थे 17-18 में, जो कि बढ़कर 4515 अडॉप्शंस हो गए हैं 2024-25 में. मतलब अडॉप्शंस भी बढ़ते हुए हमें दिखे हैं, राइट? तो इनको मार्क करेंगे न्यूज को. फिर इसी के अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किन्होंने टॉप किया? इंदौर के द्वारा टॉप किया गया, राइट? देन इंडिया का पहला ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट, राइट, कहाँ लॉन्च किया गया? ये गुजरात स्टेट में लॉन्च किया गया. ठीक है. फिर इसी के अलावा कौन होस्ट कर रहा है
4th एडिशन ऑफ द बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज को। तो हमारी कंट्री इंडिया होस्ट कर रही है 4th बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज को, राइट, ताकि साइक्लोन्स एंड फ्लड से हम पहले से ही प्रिपेयर रह सकें। देन इस्लामपुर, राइट, इसका रीनेमिंग करके ईश्वरपुर कर दिया गया, राइट। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में है, ठीक है। फिर इसी के अलावा अभी एक मार्शियन मीटियोरॉइड था जो अर्थ पे गिरा था, उसको बेचा गया, राइट, उसकी बोली लगी एंड वो सेल हुआ वर्थ $5.3 मिलियन का, राइट। फिर इसी के अलावा जो इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स हैं वो भी हमें बढ़ते हुए देखिए इन द फर्स्ट क्वार्टर, कितने? 47% से। फिर इसी के अलावा NCLT इन्होंने अप्रूव किया मर्जर ऑफ अडानी सीमेंट, किसके साथ? अंबुजा सीमेंट के साथ। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इनके द्वारा एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट ये रिपोर्ट रिलीज की गई अभी, जो बताती है कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो 17,444 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ गया है। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करा है वो केरला स्टेट के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया, देन कर्नाटका के द्वारा एंड देन तमिलनाडु के द्वारा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया गया है इस फॉरेस्ट एरिया को ग्रो करने के लिए। यहाँ पे एक डाटा अगर पूछा जाए कि फॉरेस्ट एरिया जो केरला का सबसे ज्यादा ग्रो हुआ वो कितना हुआ स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, तो ये ध्यान रख सकते हो 4,137 स्क्वायर किलोमीटर से यहाँ पर ये ग्रो होता हुआ दिखा। फिर इसी के अलावा क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये कौन सा एडिशन था इस रिपोर्ट का? तो ये 8वां एडिशन हमें देखने को मिला था। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया। एंड कब रिलीज किया गया? मैंने अभी पीछे बताया था कि 29th एडिशन ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कहां पर हुई थी? चंडीगढ़ में हुई थी, उसके दौरान इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कहां पे लॉन्च किया गया? वाराणसी में इसको लॉन्च किया गया। वाराणसी कहां पर है? यूपी में। फिर इसी के अलावा अभी रिसेंटली एक चैटबॉट लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। ये AI पावर्ड चैटबॉट रहेगा जो कि व्हाट्सएप के थ्रू स्किलिंग प्रोवाइड कराएगा। तो यह है स्किल्स इंडिया असिस्टेंट, मां करेंगे इसको भी, राइट। देन माइनिंग टूरिज्म लॉन्च करने वाली वो पहली स्टेट कौन सी बन गई है? माइनिंग टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वो है झारखंड। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, इसको यूनेस्को टैग मिल गया एंड इंडिया का काउंट अब 13 हो गया है इन द यूनेस्को टैग हेयर फॉर द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंडिया की कितनी साइट्स हैं अभी? टोटल 13 साइट्स हैं। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को ऐड किया गया जो कि 13वीं साइट बनी, राइट। एंड अगर हम बात करें ये साइट की, इसके अलावा रामसर साइट्स, 2 रामसर साइट्स ऐड की गई, बिहार से ऐड की गई। पहली साइट है आपकी गोकुल जलाशय एंड दूसरी साइट आ जाती है उदयपुर झील, इन दोनों को ऐड किया गया है, ठीक है। एंड अब इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं? 93 हो गई हैं इन दोनों के एडिशन के बाद। दोनों कहां पर आ जाती हैं? बिहार में। अगर हम टॉप पे देखें यूके है यहाँ पे विद 176 साइट्स, देन मैक्सिको सेकंड पोजीशन पे आ जाता है वर्ल्ड में 144 रामसर साइट से, एंड हमारा इंडिया थर्ड पोजीशन पे है विद 93 रामसर साइट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ले किया फाउंडेशन स्टोन एंड इनॉग्रेट किया मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वर्थ 60,000 करोड़ रुपीस, कहां पर? ओडिशा में। अगर इनके हम प्रोजेक्ट्स देखें यहाँ पे, तो पहला प्रोजेक्ट आ जाता है आपका रेलवे सेक्टर में, आप ये देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट्स रेलवे सेक्टर में ऐड किए गए। देन एजुकेशन सेक्टर में IIT का एक्सपेंशन करने की बात की गई, 8 IITs एस्टेब्लिश करने की बात की गई 11,000 करोड़ की लागत से, तिरुपति आंध्र प्रदेश में, पलक्कड़ केरला में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, जम्मू एंड कश्मीर में, जोधपुर राजस्थान में, पटना बिहार में, इंदौर मध्य प्रदेश में, ठीक है। मार्क करके चलेंगे इसको। अगर मैं बात करूं उड़ीसा की, क्योंकि उड़ीसा में ये लॉन्च किए गए इनिशिएटिव सारे, यहाँ के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी, भुवनेश्वर कैपिटल एंड सिमलीपाल टाइगर रिजर्व यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। फॉर द स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया BSNL का स्वदेशी 4G नेटवर्क, कहां पर? उड़ीसा में इसको इनॉग्रेट किया गया एंड ये काफी बेनिफिशियल रहा है, 4th जनरेशन नेटवर्क है एंड ये 25वीं सालगिरह थी आपकी BSNL की जब इसको लॉन्च किया गया, राइट। 50th
एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था, इसको हम सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन भी कह सकते हैं। ओडिशा में इसको लॉन्च किया गया। फिर इसी के साथ साथ ये जो नेटवर्क है ये फीचर करेगा रेडियो एक्सेस नेटवर्क को, जो कि तेजस नेटवर्क को द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। सी डॉट का हेल्प देखने को मिलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का हेल्प देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर हम देखें क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर यहाँ पे यूज किया जाएगा, फुल्ली सॉफ्टवेयर ड्रिवन रहने वाला है। इवन यहाँ पर हम देखेंगे 5G टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ता हुआ दिखेगा। एंड 5G टेक्नोलॉजी को इनिशियली लॉन्च किया गया था 1 अक्टूबर 2022 को इंडिया में, एंड 8 महीने के बाद ये 2 लाख साइट्स पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। फर्दर हम देखेंगे 5G साइट्स को रोल आउट किया जाएगा इवन इन द रिमोट एरिया, ताकि जो बेटर नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो और स्ट्रॉन्ग हो सके। एंड जैसे हम पूरे इंडिया में फैल जाएंगे उसके बाद 6G आएगा, फिर 7G, फिर 10G एंड सो ऑन। यहाँ पे आपकी स्पीड जो है इंटरनेट की फर्दर और स्केल होती रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड एडिशन ऑफ उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेसी फेस्टिवल। कहां पर हुआ? पटना बिहार में। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद रखेंगे कि उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल कहां पर देखने को मिला? बिहार में देखने को मिला, पटना बिहार में। इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था साहित्य अकेडमी के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में। 25 से 28 सितंबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। एंड ये इसका थर्ड एडिशन था इस फेस्टिवल का जो हमें देखने को मिला। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, इंडियन एयरफोर्स एंड IIT रूपर ने कभी एक MOU साइन किया है इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, राइट, जिससे जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं इंडियन एयरफोर्स की वो मीट होती हुई दिखेंगी। टेक्निकल एडवांसमेंट हमें देखने को मिलेगा, कोई अपग्रेड्स हैं तो वो देखने को मिलेंगे, टेक्निकल अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती हुई दिखेगी, यूज केसेस बढ़ते हुए दिखेंगे। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना यहाँ पे मेन एम रहने वाला है इस MOU का, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फिर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया श्रीश चंद्र मुर्मू जी को एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। डायरेक्ट क्वेश्चन, 3 साल के लिए यहाँ पे ये अपॉइंट किए गए हैं। एंड ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे राजेश्वर राव जी को, राइट। देन USA ने विड्रॉ कर लिया यूनेस्को से। इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए किनको अपॉइंट किया गया है गिफ्ट सिटी का, MD एंड CEO संजय कौल जी। इसी के अलावा अगर पूछा जाए एक्सिस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो है नीरज गंभीर। देन NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए? नितिन गुप्ता जी। फिर इसी के अलावा नेक्स्ट पे आ जाते हैं मिथुन मनहंस, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये 37वें BCCI प्रेसिडेंट अभी अपॉइंट किए गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखेंगे, ये सक्सीड करेंगे किनको? रॉजर बिन्नी को, ठीक है। फिर इसी के अलावा पेटीएम मनी के अगर पूछा जाए, पेटीएम मनी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन अपॉइंट किए गए हैं? संदीप भारद्वाज। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक पर। CSIRs के आम AMPRI जो कि है एडवांस मटेरियल प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने सोडार सिस्टम को डेवलप किया जो कि है साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम फैसिलिटी। इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट यहाँ पर किया गया। ये जो सिस्टम है काफी बेनिफिशियल रहेगा, इससे हम क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज के ऊपर काम करेंगे। इन्वायरमेंट को स्टडी करने का काम किया जाएगा, उसके ऊपर डाटा कलेक्ट करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का काम करा जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट अभी एक नई फिनलेस स्नेक ईल स्पीशीज डिस्कवर की गई है, नेम्ड आफ्टर कन्याकुमारी, याद रखेंगे। इसका नेम रखा गया है एप्टेरी चूटस कन्याकुमारी, राइट। ये इस नई ईल स्पीशीज का फिनलेस स्नेक ईल स्पीशीज का नाम ये रखा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्पोर्ट्स के ऊपर। अभी एशिया कप हमें देखने को मिला, 17वां एशिया कप था। किसके द्वारा जीता गया ये एशिया कप को? ये हमारी इंडियन टीम के द्वारा जीता गया। इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल में हराया। यहाँ पर ये एशिया कप हो कहाँ रहा था? दुबई UAE में ये हमें देखने को मिल रहा था इवेंट। यहीं पे याद रखेंगे जो बोनस प्राइस था 21 करोड़ रुपए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे अभिषेक शर्मा, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा, गेम चेंजर ऑफ द मैच शिवम दुबे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा एंड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कुलदीप यादव। यहीं पे याद रखेंगे जो नेक्स्ट एडिशन होगा वो बांग्लादेश में होगा 2027 में, ODI फॉर्मेट में हुआ था। ये जो हुआ था अभी करंट एडिशन जो आपका 17वां एडिशन था ये T20 फॉर्मेट में था। जो 18वां एडिशन होगा वो ODI फॉर्मेट में होगा, बांग्लादेश में होगा। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, फिर इंडिया ने अभी 10वां एडिशन जीत लिया ऑफ द 2025 SAFF अंडर-17 मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप। हमने बांग्लादेश को यहाँ पे फाइनल में रहा है टू विन दिस टाइटल। मार्क करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों जगह इंडिया की विक्ट्री हमें देखने को मिल रही है स्टूडेंट्स। सो इंडिया स्पोर्ट्स में काफी अच्छा हम परफॉर्म कर रहे हैं। ये इवेंट जो था ये बेसिकली जो इवेंट था ये हुआ कहाँ पर था? कोलंबो श्रीलंका में ये इवेंट था। बांग्लादेश को हमने हराया और ये 10वां एडिशन था। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल डेफ डे, 28 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। जो बच्चे या जो लोग सुन नहीं सकते उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए कि डे टू डे वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए 2025 में हमने 28 सितंबर को ऑब्जर्व किया। मैं ऐसा क्यों बोला? क्योंकि लास्ट संडे
ऑफ सितंबर मंथ ये हम ऑब्जर्व करते हैं, और इस बार 2025 में ये 28 सितंबर को था। इसी के अलावा इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ भी ऑब्जर्व किया जाता है 22 से लेकर 28 सितंबर तक। देन आ जाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, 28 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड ग्लोबल अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए कि जो हम इतना इंटरनेट यूज करते हैं, राइट, जो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए छठा एडिशन ये डे हमने ऑब्जर्व किया इसका। एंड इंश्योरिंग एक्सेस टू एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन इन द डिजिटल एज, ये थीम रहेगी। 2015 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, 29 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व किया गया। इसका एम था बेसिकली फूड लॉस को रोकना एंड जो इतना फूड वेस्ट होता है ग्लोबली उसको रोकना, ताकि इवन सभी लोगों तक खाना पहुंच सके। इस बार हमने छठा ऑब्जर्वेंस इस डे का ऑब्जर्व किया। यूनाइटेड नेशन का आर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया। पहली बार 2020 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। फिर आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर स्टूडेंट्स। 4 ऑर्गेनाइजेशन याद रखेंगे, नेशनल जूट बोर्ड, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड ICAR का आर्म CRIJAF एंड एक और इंस्टीट्यूट या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम बोले गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। तो इन चारों के द्वारा यहाँ पर अभी मिलकर अभी बेसिकली एक MOU साइन किया गया है ताकि जूट प्रोडक्शन को, जूट फार्मिंग को, राइट, जूट ट्रेड को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके। राइट, जूट के ऊपर काम करने की बात की गई। राइट, जूट को प्रमोट करने के लिए नागालैंड में ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा एंड गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के द्वारा मिलकर यहाँ पे ये MOU साइन करा गया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसी के अलावा और याद रखेंगे कि इसरो प्लान कर रहे हैं 2035 तक हम मून मिशन, एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करें एंड मून पे मिशन 2040 तक हम प्लान कर रहे हैं। राइट, फिर इसी के अलावा अभी रिसेंटली सिम्बेक्स एक्सरसाइज हुई थी, 32वां एडिशन हुआ था सिम्बेक्स एक्सरसाइज का। सिंगापुर में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली थी। एंड्रे रसल इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। देन सेकेंड एडिशन ऑफ द वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ, कहाँ पर, हैदराबाद में हुआ। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स, ICC के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि नेक्स्ट 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कौन होस्ट करेगा, इंग्लैंड होस्ट करेगा। देन फाइड चेस वर्ल्ड कप की बात करें, इंडिया होस्ट कर रहा है इस फाइड चेस वर्ल्ड कप को। 30 अक्टूबर से लेके 27 नवंबर तक ये होस्ट किया जा रहा है। फिर इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई, इंटरनेशनल मून्स डे 20 जुलाई, 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे, 22 जुलाई को ही नेशनल मैंगो डे, 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, 24 जुलाई को नेशनल थर्मल इंजीनियर्स डे एंड 24 जुलाई को नेशनल रिफ्रेशमेंट डे, ये ऑब्जर्व किए गए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट है उस मेंशन दैट एंटिटी जिन्होंने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के साथ, ताकि इंडिया का पहला 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क इन द रिफाइनरी सेक्टर इस्टेब्लिश किया जा सके। तो ये है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, इनके साथ ये MOU साइन किया गया। एंड इंडिया का पहला 5 CNPN जो कि है कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क को रिफाइनरी सेक्टर में इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि डिलीवर करेगा सिक्योर, अल्ट्रा रिलायबल एंड रियल टाइम इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी को। नेक्स्ट मेंशन द नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इन्होंने सिक्योर किया पहला ओवरसीज रेल एंड मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट वर्थ $1 मिलियन। अभी हमने देखा था मध्य प्रदेश में वो कोचेस बनाएंगे, अब इन्होंने कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने इनके साथ BEML के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करा, कौन सी वो रहेगी वो कंट्री, वो है मलेशिया। मार्क करेंगे। एंड $1 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट था फॉर रेट्रोफिटिंग एंड रिकंडीशनिंग देयर मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। नेक्स्ट मेंशन द कंपनी जिन्होंने अभी पार्टनर किया फ्रेंच सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर यूटिलसेट के साथ टू डिलीवर वन वे लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कनेक्टिविटी को अक्रॉस इंडिया, तो वो है नेल्को लिमिटेड। ये कोलैबोरेशन एम करता है टू प्रोवाइड सिक्योर लो लेटेंसी एंड हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को, जो कवर करता है इंडिया के लैंडमास, टेरिटोरियल वाटर्स को एंड रिमोट रीजन्स को। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने पार्टनर किया विद L&T एंड अनाउंस अ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स टू डेवलप इंडिया का पहला क्वांटम वैली टेक पार्क को अमरावती आंध्र प्रदेश में, तो वो है LTI माइंडट्री। नेक्स्ट व्हाट वाज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इन जुलाई, जो कि मेजर की गई CPI के द्वारा, राइट, फॉर रूरल अर्बन एंड कंबाइंड के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जो रिलीज की गई नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा। तो 1.55% यहाँ पे इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन हमें जुलाई के महीने में देखने को मिली। मार्क करेंगे, राइट, एंड इट वाज अ 8-year लो जो हमें यहाँ पे देखने को मिली। अगर लास्ट जून के महीने में देखें तो ये 2.1% थी और इस बार जुलाई के महीने में 1.55% थी।
नेक्स्ट, उस कंपनी को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 700 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड से क्या भी याद रखेंगे कि ये एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन यूनिट स्टैब्लिश कर रहे हैं धौलेरा में। काफी बड़ा प्लांट रहेगा यहाँ, सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर होंगे यहाँ पर। धौलेरा कहाँ पर है? गुजरात में। एंड गुजरात को ही हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी जो कि बन गई फर्स्ट इंडियन कंपनी जिन्होंने ज्वाइन किया इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मटेरियल मेटल्स को अगस्त के महीने में। तो वो कौन सी कंपनी है? वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। मूविंग ऑन, किस कंपनी ने अभी एक नॉन बाइंडिंग हेड्स ऑफ अग्रीमेंट साइन किया विद पॉस्को ग्रुप टू जॉइंटली एक्सप्लोर सेटिंग अप अ 6 मिलियन टन्स पर एनम इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इंडिया में थ्रू अ 50-50 जॉइंट वेंचर? तो ये है JSW स्टील लिमिटेड। मार्क करेंगे 50-50 जॉइंट वेंचर रहेगा एंड 6 मिलियन टन्स पर एनम का यहाँ पे स्टील प्लांट रहेगा ये। फिर आ जाते हैं, सेबी ने एक्सटेंड किया टाइमलाइन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फ्रेमवर्क रिलेटेड टू द प्रोग्रेस ऑफ मार्जिन ऑब्लिगेशंस थ्रू प्लेज एंड रीप्लेज विद इन द डिपॉजिटरी सिस्टम्स टू व्हाट? टू 10 अक्टूबर 2025। पहले क्या था? 1 सितंबर था, जिसकी डेडलाइन को बढ़ा के 10 अक्टूबर 2025 कर दिया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर ICRA जो कि इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इन्होंने प्रोजेक्ट किया इंडिया का GDP एट व्हाट परसेंट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26। तो 6.7% इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया ग्रोथ को। नेक्स्ट, उस एयरलाइन का नाम बताओ विद विच इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया फॉर द सप्लाई ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो एयर इंडिया के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, राइट। एयर इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया, ये MOU साइन किया फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए। नेक्स्ट है, किस कंपनी वो पहली इंडियन कंपनी बन गई फ्रॉम द एनर्जी सेक्टर जिन्होंने ज्वाइन किया रिन्यूएबल एनर्जी 100 इनिशिएटिव को, टेकिंग अ मेजर स्टेप इन द क्लीन एनर्जी? तो कौन सी कंपनी है? ये है सुजलोन ग्रुप, राइट। और ये RE100 इनिशिएटिव क्या है? ये है बेसिकली एक प्लेटफॉर्म, ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो कि वेरियस बिजनेस लीडर्स को साथ लाएगा ताकि रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम किया जा सके, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने का काम किया जा सके। Next, according to the report released by which of the following in August, the Indian economy may have recorded a growth rate of around 6.8 to 7% in the first quarter of FY26. तो SBI रिसर्च के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, राइट। ये है ERD, इकोनॉमिक रिसर्च डिवीजन डिपार्टमेंट होता है ये SBI का, उनके द्वारा ये डाटा प्रोजेक्ट किया गया है इन देयर इकोरैप रिपोर्ट। ये भी आ जाता है कि इकोरैप रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? तो SBI के ERD के द्वारा ये रिलीज की जाती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दैट कंपनी जिन्होंने एक MOU साइन किया विद जापानीज कंपनी मित्सुई OSK लाइन्स लिमिटेड एंड ट्रेड्स वार्ड्स इनकॉर्पोरेशन ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके द कॉर्पोरेशन इन द ऑटोमोबाइल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका। तो वो कौन सी है? वो है सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन। ये MOU एम करेगा टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग चैलेंजेस इन द ऑटोमोबाइल ट्रेड ऑपरेशंस बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका। नेक्स्ट, मेंशन द फाइनेंस कंपनी जिन्होंने सैंक्शन किया एक टर्म लोन ऑफ 199.7 करोड़ रुपीस टू सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ताकि डेवलप किया जा सके इंडिया का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। कहां पर? सूरत, गुजरात में। तो मेंशन दैट फाइनेंस कंपनी वो है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एंड ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए यहाँ पे टर्म लोन सैंक्शन किया गया। नेक्स्ट, टू डेवलप वॉट इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इन्होंने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ अगस्त के महीने में। तो भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ये स्मॉल आप इसको कह सकते हैं, ये छोटे आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स होंगे, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। एंड ये स्टैब्लिश करने की बात की गई, जिससे हम देखेंगे ये EIL ने, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने ये MOU साइन किया है नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ ताकि इंजीनियरिंग सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके, राइट। एंड जो भी कॉम्पोनेंट्स होंगे वो यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा सके। नेक्स्ट, अगस्त के महीने में अगस्त 2025 इशू ऑफ EY इकोनॉमिक वॉच, अर्नस्ट एंड यंग इकोनॉमिक वॉच रिलीज की गई अर्नस्ट एंड यंग के द्वारा, जिसमें बताया कि इंडिया कुड बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ द परचेसिंग पावर पैरिटी किस ईयर तक? तो 2038 तक ये बनने की बात की गई है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी विद एन एस्टिमेटेड GDP ऑफ $34.2 ट्रिलियन इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। और 2030 तक इंडियाज GDP इज एक्सपेक्टेड टू रीच $20.7 ट्रिलियन इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी। एंड GDP फॉर ये सेकंड है, फर्स्ट पे कौन रहेगा? चाइना रहेगा, करेक्ट। एंड ये IMF के द्वारा प्रोजेक्शंस यहाँ पे किए गए हैं फॉर दिस। एंड ये वाला प्रोजेक्शन किया गया है ENY के द्वारा। एंड ये जो अभी हमने बाद में डिस्कस किया, ये प्रोजेक्शन किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रेंथन होगी। Next is our homework section, students. First question is Sauragya. This is a brand, a premium ethnic brand launched by which organization in collaboration with whom? Second question, recently RBI
Abhiyan 2025 was launched? It was launched in New Delhi. You have to tell me what is this Rabi Abhiyan. Correct. Then apart from this, in Bihar, 10,000 rupees to 75 lakh women will be provided. Name the scheme under which this amount will be provided. Fourth question. Recently, how many natural sites from India has been added to the UNESCO's tentative World Heritage list? And fifth question, students, tell me recently who will be hosting the 5th edition of the World Teak Conference, right? Where this will be hosted and what will be the theme of it. Then sixth question, what is the rank of our India in Global Innovation Index and the country that secured the first position? Seventh question, recently, tell me recently if I ask you who has been appointed as the next chairman of Coal India Limited. Eighth question, who has been appointed as the chairman of Advertising Standard Council of India? And ninth question, students, tell me recently who received the inaugural Diabetes Global Impact Award? Diabetes Global Impact Award. This is the inaugural edition. That is the first edition. And then 10th question, recently which Indian naval ship has reached Fiji? Tell me that, and why this Indian naval ship, what is the name of it that reached Fiji? So these are your 10 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.